हेलो गाइस, वेलकम टू कैरियर ओडिशा यूट्यूब चैनल। तो आज आम डिस्कशन करबा हमर फर्स्ट सेमिस्टर कौन कौन सिलेबस रोचे। तो हमर फर्स्ट सेमिस्टर रे फर्स्ट पेपर रोचे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो थिरा हमर रोचे इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। सेथिरा हमर रहबो कांसेप्ट स्कोप रा फिलोसॉफी रा एजुकेशन, देन टाइप्स एंड फंक्शंस, देन रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन, तबरे फिलोसॉफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। देन हमर यूनिट 2 आसी जबो इंडियन एजुकेशन, जोटा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रे, जेमते कि एंशिएंट पीरियड रहबो, मेडिएवल पीरियड रहबो, मॉडर्न पीरियड रहबो। ता सहित हमर जो फिलोसोफर थिले रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, मोहनदास करमचंद गांधी, जिद्दू कृष्णमूर्ति, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। देन हमर आसीबो ईस्टर्न सिस्टम्स एंड वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। त हमर ईस्टर्न सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो होचे सांख्य, योगा, न्याय, वेदांत, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म ए सब। देन वैल्यू ऑफ एजुकेशन आसी जब हमर यूनिट 4। तो सेथिरे हमर रहि जब कांसेप्ट ऑफ वैल्यू, क्लासिफिकेशंस ऑफ वैल्यूज, वैल्यू क्राइसिस, अप्रोचेस टू इनकल्केट वैल्यूज, वैल्यूज एंड हार्मोनियस लाइफ। देन यूनिट 5 आसी जब टीचिंग एज ए प्रोफेशन। तो टीचर एज ए नेशन बिल्डर, टीचर एज ए क्रिएटर एंड फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स, टीचर एंड द फ्यूचर सोसाइटी। देन हमर आसी जब सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर हमर होचे पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सेथिरे हमर फर्स्ट यूनिट रो होचे अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जोतरे कि हमर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन कांसेप्ट जबो। देन प्रिंसिपल्स हमर कोन रोचे डेवलपमेंट रो, देन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट रो रहबो, देन डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोचेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। देन हमर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट आसीबो। तो हमरो जो पियाजेट, एरिक्सन, कोलबर्ग, फ्रेड, गोल्डमैन जो सब थ्योरी देथिले, से सब थ्योरीज हमर आसी सेकंड यूनिट रे। देन चाइल्डहुड एज ए पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन। तो फर्स्ट हमर आइबो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंटल टास्क। देन चाइल्ड डेवलपमेंट तार केमते फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होचे चाइल्डहुड रे। देन चाइल्ड इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तापर आसी हमर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, conflicts resolution and social development. Then stages of social development, isolated play, parallel play and social play. Then characteristics of socially mature person. Then unit 4 is adolescence as a period of transition. The characteristics and needs raheba adolescence ro. Then genesis of problems during adolescence, physical, cognitive, emotional, social, moral and language development. Then as adolescent groups, that are gangs, mechanisms of adjustment with special reference to defense mechanism and holistic development. Then leadership, types of leadership, development of leadership qualities in adolescence and its educational implications. Then आसे हमें थर्ड पेपर हमर रहि जबो ICT, जोटा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग। तो तार फर्स्ट यूनिट रहउची इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कि हमर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोन, कम्युनिकेशन कोन, देन हमर इंस्ट्रक्शनल मीडिया and 8 कौन रोचे। देन हमरा आसीबे कांसेप्ट, इंपोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ ICT। देन यूनिट 2 रहबो ICT इन एजुकेशन, द नॉलेज एक्विजिशन एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच। देन रहबो क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फ्लैडनेस, इंटरैक्शन एंड एनालिसिस, कैटेगरी सिस्टम। देन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन रहबो, जेमते कि तार कांसेप्ट, नीड, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। देन प्रोग्राम लर्निंग कोन रहबो, तार प्रिंसिपल्स, टाइप्स, mode of presentation, development, applications and role of teacher. Then changing role of the learner and the teacher in ICT integration and challenges. Then unit 3 rahebo computer fundamentals and applications, the type, characteristics and features of computers. Components rahebo, components of computer jemte hardware, software, memory and maintenance of computers. Then operating systems, DOS, Windows and Macintosh and mobile apps for teacher. Then softwares for word processing, presentation, statistical and graphical page, layout, multimedia and web page create. Then concept, application and challenges of computer networks, internet, email and digital space. Then unit 4 amar asibo ICT enriched learning experience, the application of ICT for enriching classroom experiences. Then application and use of multimedia educational software for classroom situations. Then use of internet based media for teaching and learning engagement, acknowledgement. Then project based learning using computer, internets and activities.
then collaborative learning using group discussion, projects, field visits and blogs etc. तापर हमारे यूनिट 5 आसीबा application of computers in education. Computers as a learning tool, concept of e-learning. Then web 2.0 technologies, characteristics, types and examples, virtual classroom, smart boards, tools and opportunities. Then open education resources, तार concept and significance रहबा. Then critical issues in internet usage, authenticity, addiction, plagiarism, ethical and legal standards. तो हमारा देन आसे जेबो पेडागोजी. तो पेडागोजी रे हमारा फर्स्ट रहुचे सोशल साइंस रे हमारा फर्स्ट यूनिट रहुचे सोशल साइंस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी. माने मीनिंग तार नेचर स्कोप नेचुरल एंड सोशल साइंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंस रहबो, मीनिंग हिस्ट्री नेचर एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज, distinction between social science and studies, understanding society through various social sciences. Then unit 2 आसे जब हमर aims, objectives and academic standards of social science. तो तारा फर्स्ट हमारा से जो major aims और objectives, then Bloom's taxonomy of educational technology, then academic standards and learning outcomes of teaching learning social science, then recommendations कौन देइथिला NEP 1986, NCF 2025, APSCF 2011 कौन recommendation देइथिले, then value of teaching social science, then approaches, methods, strategies and techniques of teaching social science. तारा meaning रहइबो, need, significance रहइबो, कौन हमर approaches रहउचे, methods रहउचे, strategy रहउचे, techniques रहउचे social science पढ़ा पे. then तारा रहउचे teacher centered approach, then learner centered approach, strategies, techniques कौन रहउचे, then the brainstorming, team teaching, mind mapping, questioning etc. then activities रे हमारा से जीवो role play, demonstration, trips, field trips, social science clubs, exhibition etc. then unit 4 आसे जीवो planning and teaching social science, जोटा कि हमारा micro teaching गोटे रहउचे. तो माइक्रो टीचिंग रो फर्स्ट हम जानिबा मीनिंग, कांसेप्ट एंड स्टेप्स, देन जानिबा तार स्किल्स केमती तार रहउची, स्किल्स कौन जेमती कि हम जानछ इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, रेनफोर्समेंट, स्टिमुलस, वेरिएशंस. देन ईयर प्लान एंड यूनिट प्लान, नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन प्लानिंग. तापर यूनिट 5 टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस इन सोशल साइंस. तापर कम्युनिटी रिसोर्सेस, ह्यूमन एंड मटेरियल साइंसेस, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी एंड म्यूजियम, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ करंट एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन टीचिंग social sciences, handling hurdles in utilizing resources, professional development of social sciences teachers. then जानिबा आ गुडा हमर pedagogy जोडा रहउची इंग्लिश. तो फर्स्ट रहउची इंट्रोडक्शन टू ELT. तारा फर्स्ट ELT रे हम जानिबा मीनिंग, नेचर, स्कोप, देन तापर स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट, देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, teaching English in bilingual and multilingual context. then you need to assess method and approaches, कौन method रहउची English language पढ़िया पे. then listening and speaking skills. तो हम जानबा बहुत सारा types and sub skills of listening, techniques and materials for teaching listening, sub skills of speaking, techniques and materials for teaching speaking, activities to develop learning and listening and speaking skills. then reading and writing skills. then जेमती स्पीकिंग स्किल्स जानिले, लिसनिंग स्किल्स जानिले, सेमती राइटिंग और रीडिंग स्किल्स भी जानिबा. then developing integrated skills and the use of ICT in English language teaching, the teaching of prose, poetry, use of multimedia in ELT, online resources for ELT and social networking. तो हमर ओवरऑल एप्तिके ही सिलेबस रहउचे फर्स्ट सेमेस्टर पई. और खूब शीघ्र हमर ऑनलाइन क्लास मध्ये स्टार्ट होको जाउचे. जदि आपनको फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस दरकार एवं किछि भी मटेरियल दरकार, देन मु वीडियो डिस्क्रिप्शन रे गोटे लिंक मेंशन कर देबी, जोथर आपण डायरेक्ट हम टेलीग्राम रे जॉइन हे सब मटेरियल पाई परबे एवं सिलेबस पाई परबे. थैंक यू.